Okay, so this is the cartogram. आप लोग पहले देख चुके हो, ये पिछले लेक्चर के अंदर I uploaded this. This is a population cartogram जिसमें जो छोटे-छोटे pixels हैं, ये भी मैंने सारी बात की है. These are representing 500,000 people. ठीक है? फिर I just talked about the objectives and we have come to this distribution of the world population over the last 5,000 years. ठीक? So we start from 3000 BC. What we have is पॉपुलेशन बेसिन के अंदर ये इफ यू लुक एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे मौजूद है. वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ सिविलाइजेशन अराउंड चाइना के अंदर है. ये गैंगीज रिवर के साथ साथ है जो सॉरी उनका यांगसी रिवर जो है. देन हमारे पास ये टर्किश थोड़ी सी पॉपुलेशन है. हमारी थोड़ी सी भी 3000 BC के अंदर वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ पॉपुलेशन जो विच वाज जो एंग्लो सैक्सन्स के जो वो थे प्रिकर्सर्स थे. And we have a little bit of population जो हमें नजर आ रही है यहाँ पर in the Mexican area. यूएसए के बिल्कुल टिप के ऊपर, यहाँ से मेक्सिको स्टार्ट होता है, यहाँ पर है. फिर यू कीप मूविंग स्लोली पॉपुलेशन, और इसी बेल्ट में इक्वेटर के इर्द गिर्द आप देखेंगे जो येलो कलर है, ठीक है, वो डेंस होना शुरू हो जाएगा. इट्स गोइंग टू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स डार्कर शेड्स टिल इट मूव्स टुवर्ड्स बिल्कुल दिस मरून कलर. ये नीचे यहाँ पर okay, so ye maroon color that, and you'll keep seeing 180. This is the time when Christianity was born, or a population explosion, expulsion hai, but it is all around the equator. Keep moving 580, 1080, 1500 AD, 1600 AD Islam, and ये 16 to 1700 के दरमियान में. और उसके बाद आप ये देखेंगे कि इस एरिया में अफ्रीका के अंदर एकदम से पॉपुलेशन ग्रोथ है, लेकिन सब सहारन अफ्रीका में. You keep moving 1800s में, this is when the industrial revolution started. Now there's big population explosion. पूरा का पूरा यूरोप जो है वो this is highly densely populated. Americas have started getting populated. Look at the edges of South America. Sub-Saharan Africa started getting populated. और India और China के जो areas हैं वो 1700 से वो 1500 AD से start हो गए थे densely populated होना. और 2018 में आए तो वही पैटर्न चल रहा है. We see the same pattern के warmer countries के equator के इर्द गिर्द there's more population explosion. India and China are the most densely populated, the most populated, sorry. The distribution of world population which is greater than 500 million. और उसमें पाकिस्तान भी थोड़ा सा शामिल है. So a lot of now you can see कि कहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, people where are they? So basically हमने लास्ट टाइम बात की थी पॉपुलेशन क्या होती है. इट इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज. तो अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन इज वन स्पीशीज, सो वी कैन कॉल इट द ह्यूमन पॉपुलेशन. लेकिन फिर हम उसको भी सब डिवाइड करते हैं, ऑक्यूपाई द सेम एरिया. फिर हम एरिया वाइज आ जाते हैं. जब पहली फर्स्ट कंडीशन इज मेट, देन वी से कि ओके, if you want to define different populations within the human population, we'll define them according to areas, as in according to their, let's say, world regions. We could say continents ho gaye, then we could say countries ho gayi. Then they also rely on the same resources. They are affected by the same environmental factors. So जब हम within countries के अंदर we can define socio-economic status के level के ऊपर third level आ जाते हैं कि maybe उनके resources different है. So that's why ये हम सब categorization of population कैसे करते हैं. Then they are affected by the same environmental factors. उनमें environment कैसे affect करती है. They interact and breed for the propagation of their species. Always remember. So they are because उनकी growth होनी है. So this is the definition of a population कि वो अगर आज 2 है तो वो in exponentially growth के बाद they'll become 2, 4, 16, 32, 64. So the whole number of people or inhabitants in a country or region, according to Merriam-Webster, is known as the population. Medical students population, the population of, let's say, rickshaw drivers in Karachi. So in biostatistics or statistics, a population is the entire pool of is the entire pool from which a statistical sample is drawn. पूरे pool में से, और इसमें से फिर आप representative population को भी select them. A population may refer to an entire group of people, objects, events, hospital visits, or measurements. A population is an aggregate observation of subjects grouped together by a common feature. So always remember, whenever you're going to define a population, even in your studies case or control cohort, cross-sectional,
जो पॉपुलेशन आप डिफाइन करेंगे उसका कोई एक सिंगुलर डिफाइनिंग फीचर होगा जिसकी बेसिस पे आप उसको ग्रुप टुगेदर कर देंगे. कुड बी मेडिकल स्टूडेंट्स, कुड बी ऑल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, कुड बी मेल्स, कुड बी फीमेल्स, कुड बी पीपल ऑफ अ सर्टेन एज ग्रुप, लेकिन वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा जिसपे सारी पॉपुलेशन सेम होगी. दैट्स हाउ यू डिफाइन अ पॉपुलेशन, और इसी पे आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज डिफाइन करते हैं. सो नाउ पॉपुलेशन डायनामिक्स और चेंज क्या होती है, क्योंकि अभी हम इसी की बात करेंगे, ट्रांजिशन की बात करेंगे. ठीक है. सो डिफाइंड जनरली इट इज द डिफरेंस इन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन बिटवीन द एंड एंड द बिगिनिंग ऑफ अ गिवन टाइम पीरियड. मैंने लास्ट में बात की थी, व्हिच इज यूजुअली 1 ईयर. तो स्पेसिफिकली इट इज द डिफरेंस इन पॉपुलेशन साइज बिटवीन 2 consecutive years in a given area. और यूएन के डिनोमिनेटर्स के अंदर इट इज यूजुअली मिड ईयर पॉपुलेशन व्हिच इज मेजर्ड फ्रॉम 1st July 1 year to 1st July 1 year, तो मिड ईयर पॉपुलेशन है. But whenever you're taking it as a denominator for birth rate and death rate, then you only measure it once. ठीक है, at that time, not the whole. वो जो difference है वो आप calculate करेंगे through the balancing equation, वो birth rate और death rate से. Then changes in a population size, growth rate and composition can have profound effects on society. Always remember, you know this yourself. Look at defense, कैसे दूर दूर घर बने हुए हैं, जब आप घरों के अंदर भी जाते हैं, every human being occupies one room. When you come to, let's say, Pelwan Road or these peri-urban areas, that one room that you occupy now in this situation is a house, and it is, और उसका एक ही वो इसी का portion होगा, it is occupied by maybe 15 people. So that's the difference कि ये जो population के size और growth rate और composition है, ये affect करती है society को, economy को, individual health को, well-being को. And this is, I think, one of the biggest reasons why those countries which have somehow controlled their population, जिसमें ईरान है, बांग्लादेश है, which are ये हमारे लिए case studies हैं, you know, these are inspirations for us. China है, and they have actually stopped their population की जो rate of natural increase है और जो growth rate है, they've stopped it and they've reduced it. इससे बर्डन कम होता है आपके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम पे, और अल्टीमेटली जो क्लिनिशियन अपने क्लिनिक के अंदर बैठा हुआ ये पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर सर्विस कर रहा है, उसका जो उसका बर्डन है और उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, बर्डन कम होगा तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इंक्रीज होगी. And the kind of diseases that you're going to see, the length of the जो आप उनको थेरेप्यूटिक्स देना उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं with this population size. So now we talked about population के जो थोड़े से concepts हैं which we got from the last lecture. Now we are going to talk about the theories of demographic transition or theories of demography. ठीक. So सबसे पहले हम आते हैं the theory of demographic transition. Demography का मतलब है population related. Transition means to change. So the change in population जो अभी मैंने पीछे बात की उसकी theory. So basically the theory of demographic transition explains the effects of changes in birth rate. क्या explain करता है? Effects को explain करता है of birth rate and death rate change. इसके जो effects हैं on the population, ठीक है, on the growth rate of the population. This is known as the demographic transition theory. According to E.G. Dolan, E.G. Dolan was a very well-known demographer, and he was also a part-time economist. He gave this theory definition for demographic transition, that it refers to a population cycle that begins with the fall. अच्छा भी cycle बताया उसने, ठीक है. The cycle means it is going to go through different stages and go back to where it started from. A cycle always goes back to its starting point. So according to E.G. Dolan, demographic transition refers to a population cycle that begins with a fall in the death rate. यानी कि लोगों, आप कोई भी population ले लें किसी भी closed area की, वहाँ पे ना अमवात कम होनी शुरू हो जाएंगी. अब उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, हम अभी बात करेंगे कि डेथ रेट क्यों फॉल कर जाता है, कि लोग मरने कम हो जाएंगे. इसका ये मतलब नहीं कि कभी नहीं मरेंगे, लेकिन ये कि उनका रेट जो है फॉर लेट्स से सिली रीजंस, ये भी हम बात करेंगे कि वो सिली रीजंस क्या है, पॉवर्टी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी कम होती जाएंगी. एंड कंटिन्यूज, फिर पहले फॉल आती है डेथ रेट में, देन इट कंटिन्यूज विद द फेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. डेथ रेट गिर गए, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बर्थ्स बढ़ती जा रही है, उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता जाएगा. बट फाइनली इट कंक्लूड्स विद द डिक्लाइन इन द बर्थ रेट. और अभी हम बात करेंगे कि ये जो बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स हैं, ये सारे के सारे और बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं और इनकी वजह से पॉपुलेशन साइजेस कैसे चेंज होते हैं. एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग
This is not just for humans. It is for all species, all through. I was studying population transitions, और यही definitions use की जाती हैं. Let's say for a population of plants, a population of bees. तो ये these are their transitions as well. तो ये nature में है. तो जो दो बहुत बड़े नाम हैं for demography जिन्होंने ये different theories दी हैं, theories of demographic transition के different models दिए हैं, वो हैं E.G. Dolan and C.P. Blacker. So C.P. Blacker की जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. E.G. Dolan ने चार दिए हैं जो फर्स्ट 4 हैं, लेकिन जो 5th one है वो C.P. Blacker has added that. So सबसे पहले let's get a quick overview. So theory number 1 is a theory of, मैंने भी बात की कि we are going to first discuss the theory of demographic transition, then we are going to contrast it with 2 other theories जो बहुत मशहूर हैं. So the theory of demographic transition is based on actual population trends of advanced countries. ठीक है, और इसका मतलब ये कि उन्होंने actually देखा कि advanced countries जो हैं, जब हम advanced की बात करते हैं तो advanced in every sense, educational, sociological, economical, educational, को advanced हमसे. So उनके जो population trends हैं for 200 years, 300 years जब तक वो calculate किए गए, उसकी basis के ऊपर ये theory बनाई गई. So every country passes through 5 stages of population growth. ठीक है, सबसे पहले ये please look at this diagram on the lower left side. Stage 1 आती है. This stage is known as high stationary. High का मतलब है कोई चीज बहुत high है. Stationary का मतलब है कि रुकी हुई है. ठीक है, so high stationary के अंदर high birth rate है और high death rate है, और दोनों स्टेशनरी हैं, दोनों का लेवल सेम है. सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी नो डिफरेंस इन दी पॉपुलेशन का लेवल. वो जहां पर है टोटल पॉपुलेशन वहीं रहेगी. नाउ व्हेन यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम स्टेज 1 to stage 2 फॉर डिफरेंट रीजंस, डेथ रेट स्टार्ट्स टू फॉल इमीडिएटली. ठीक है, अर्ली एक्सपेंशन में, बट बर्थ रेट स्टेज द सेम. बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट जो डेथ रेट है वो इमीडिएट फॉल लेते हैं स्टेज 2 के अंदर. उससे क्या होता है, लुक एट दिस डिफरेंस बिटवीन द डेथ रेट एंड बर्थ रेट. दिस इज नोन एज द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. Birth rate minus death rate is rate of natural increase. So you know if birth rate is going to be high and death rate is going to be low, rate of natural increase is going to be positive and it's going to be high. Now we come to stage 3. This is known as late expanding. So stage 3 के अंदर stage 1 जो है the world before industrial revolution थी, ये this is the stage 1. ठीक है, industrial revolution से पहले both birth rate and death rates were high, population size was constant, but can have major swings with wars and pandemics. ठीक है, wars and pandemics में क्योंकि death एकदम से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. Then we come to stage 2. It is the introduction of modern medicine. This was the late 1700s, early 1800s introduction, which decreased the death rates, especially in children, while birth rates remain high. ठीक है, birth rates वहीं पर है. So rapid population growth हुई. Many least developed countries today are in stage 2. Pakistan is not in stage 2 right now. Then we come to stage 3, which is known as late expanding. इसमें क्या होता है, death rates continue to fall, but slowly in the middle of stage 3, birth rates also start falling. But इसके अंदर भी expansion होती है. ठीक है, so birth rates gradually fall and let me move this. Birth rates gradually decrease, increased economic conditions start हो जाती हैं, increase in women's status and access to contraception. This is stage 3 is what happened in Europe in the 1700s. Population growth continues but at a lower rate. ठीक है, अब क्या हो रहा है, death rate भी fall कर गया लेकिन साथ में birth rate भी fall कर गया. Most developing countries are in stage 3. Pakistan is in stage 3. ठीक, फिर stage 4 आ जाती है, birth and death rates are both decreasing. So this is basically a stabilized population. अब वही आ गया high stationary से low stationary, same, but यहाँ पर high birth rate and death rate है, यहाँ पर low birth rate and death rate है. So these countries have stronger economies, increased levels of education, better healthcare, increased proportion of working women. The minute women start working, they are going to have less children because they have now two careers to juggle: the professional career and the home child raising career. So increased level of education, better healthcare, increased proportion of working women, and a fertility rate of around 2 children per woman. India हो गया, ये ईरान हो गया हमारे साथ एग्जाम्पल है. So most developed countries are in stage 4. जितनी भी आपको यूरोप और ये साइड डेवलप्ड कंट्रीज नजर आती हैं वो स्टेज 4 के अंदर.
Now we come to stage 5, which is a declining. It's the question mark इसलिए दिया हुआ है because we are seeing this happening in the world right now, but because the developed, already advanced countries are going through it, तो हमें नहीं पता कि उसका result क्या होगा. और this is the reason there's a mass immigration into these countries. So stage 5 would include countries in which fertility rates have fallen significantly below replacement level. So 2 children and the elderly population is greater than the youthful population. So जब हम population pyramid देखते हैं तो उसके अंदर जो उसमें blunting हो गई है, उसकी sides जो हैं वो बजाय sharply ऊपर pyramid की form में जाने के they started to blunt out and go up straight. So सारे उसके अंदर there is people present in all age brackets. लेकिन हो सकते हैं नीचे वाला bracket जो नीचे आपका base है जिसको हम pyramid बोलते हैं वो inverse होना शुरू हो जाए. So when there is an inverse trend for the pyramid, then it is stage 5. And this is the reason these countries are opening up their doors and having a lot of migration, because they need young people who can work. So let's quickly talk about first stage. This stage has been called the high population growth potential stage. It is characterized by high and fluctuating birth and death rates, which will almost neutralize each other. People mostly live in rural areas. तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज जो करेंटली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात करें, these countries went through this stage in the late 1600s, early 1700s, and by mid 1700s they were in this stage. People mostly live in rural areas and their main occupation is agriculture, which is in the stage of backwardness. So the tertiary sector consisting of transport, commerce, banking and insurance is underdeveloped. Trade नहीं है. Trade के साथ जब भी trade होते हैं, new ideas आते हैं, there is a diffusion of new ideas, and this changes people's perception about their fertility and their economics. All these factors are responsible for low income and poverty of the masses. जब भी income low होगी और लोग गरीब होंगे, they are going to have a lot of kids because their kids become the currency. So social beliefs and customs play an important role in keeping the birth rate high. ये भी मैंने बात की. Death rate is also high because of primitive sanitation and absence of medical facilities. People live in dirty and unhealthy surroundings, जो कि हमारे peri-urban areas का currently problem है. As a result, they are disease-ridden, and the absence of proper medical care results in larger deaths. So the mortality rate is highest amongst the poor. And the poor are the most in the society. Thus, high birth rates and death rates remain approximately equal over time, and so that a static equilibrium with zero population growth prevails. ये top है, ये आपको नजर आ रहा है. This first stage, stage 1. इसमें देखिए stable or slow increase है, birth rate high, death rate high, natural increase is stable. Population pyramid कैसे? Broad base, very sharp peak, ठीक है, और inward curving edges. This is stage 1. या आप इस pyramid को देख के बता सकते हैं कौन सा stage है. Then we come to stage 2. It is called the stage of population explosion. अब इसमें क्या हो रहा है? In this stage, the death rate is decreasing. लोग कम मर रहे हैं, but the birth rate remains the same at a high level. Agriculture and industrial productivity increases, means of transport and communication develop. There's a great mobility of labor, education expands, income also increases. People get more and better quality of food products. Nutrition अच्छी हो जाती है. And remember, जहाँ जहाँ nutrition अच्छी हुई है, लोगों के कद लंबे हुए हैं, लोगों के body sizes increase हुए हैं, bone mass increase हुए हैं. We have seen this in China. कि in the last 20 or 30 years उनकी एक्चुअल में उनके जो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें एक पॉजिटिव ट्रेंड आया है. मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर एक्सपैंडेड. During this stage, economic development is speeded up due to individual and governmental efforts. Governments आ जाती हैं, states आ जाती हैं, there's some kind of policy that is guiding everybody. So increased use of better technology, mechanization and urbanization takes place, but there is no substantial change in the attitude of the people, and hence birth rate stays high. That is, economic development has not yet started affecting the birth rate. Or this is something that humans have whenever they're going to have a lot of money, and ये भी हमने ये observe किया in developed countries, they are going to start slowly getting more education and less children. Due to the widening gap between the birth and death rates, population growth grows at an exponentially high rate, and that is why it has been called the population explosion stage. This is an expanding stage in population development, where population grows at an increasing rate, as shown in the figure, with a decline in death rate and no change in birth rate. ठीक है? There it is, second stage. Declining death rate, no change in birth rate. The rate of natural increase, this is increasing. All right. High birth rate, death rate falls rapidly. और ये देखिए blunting start हो गई edges की, लेकिन broad base है अभी भी.
Now we come to third stage. It is also characterized as a population stage because the population continues to grow at a fast rate. In this stage, birth rate as compared to the death rate declines more rapidly. ठीक है, अब death rate stable होना शुरू हो जाएगा. Third stage से death rate stable होना शुरू हो जाएगा. The downward जो curve है. और जो birth rate है now that's going to start falling. As a result, population grows at a diminishing rate. Growth तो करती है लेकिन कम. This stage witnesses a fall in the birth rate while the death rate stays constant because it is already declining the lowest minimum. Birth rate declines due to the impact of economic development. Change social attitudes. Remember this, change social attitudes due to increased education and increased facilities for family planning. Population continues to grow fast because death rate stops falling, whereas birth rate though declining but remains higher than death rate. Okay? So here you go. This is your stage 4. Now declining birth rate and a stationary death rate. So birth rate is low, death rate is low. लेकिन अभी भी birth rate is a little bit higher than the death rate. अब ये fall करती है और stable हो जाती है, natural increase. Look at the sides, started blunting. ठीक है, और ये आहिस्ते से नीचे वाली base जो है उसकी broadening खत्म हो रही है. The base and the topper are becoming perpendicular to each other, similar. Now we come to the fourth. So this was the third stage. So your birth rate is falling and death rate is stable. And blunting start हो गई है edges की. So birth rate is falling, death rate falls more slowly. Increase slows down. Fourth stage, it is called the stage of stationary population. Birth rate and death rate are both at a low level and they are again near balance. अब दोबारा balancing start हो गई है. Birth rate is approximately equal to death rate and there is little growth in population. It becomes more or less stationary at a low level. There you go. Low level stationary. Here it is. Now ये stationary is होना start होगी. Birth and death rates have started becoming equal, almost. दोनों लोग हैं, same level हो गए. ठीक है, level of the birth rate is same, or you can see the blunting. Now let's come to the fifth stage. Now this fifth stage is a hypothesized stage, और अभी हम currently देख रहे हैं कि जो developed countries हैं, जो completely developed countries हैं, जिनको हम the first world बोलते हैं, all of Europe, the USA को तो चलो, the USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand, ये सारे के सारे जो हैं they've entered the fifth stage. This is an interesting stage. So the original demographic transition model had just 4 stages, but additional stages have been proposed. Both more fertile and less fertile futures have been claimed as the stage 5. अब दोनों हैं, ये मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ population projection of the UN. अगर हम high fertility पे रहते हैं और अगर हम low fertility पे रहते हैं, और ये प्रोजेक्ट किया गया है कि वर्ल्ड किस तरफ जाएगा. आर वी गोइंग टू मूव टू 9 बिलियन फ्रॉम 7 बिलियन और वी आर गोइंग टू मूव टू 5 बिलियन फ्रॉम 7 बिलियन इन द नेक्स्ट 10-20 years. So some countries have sub replacement fertility, यानी कि that is, it is below 2.1 or 2.2 children per woman. So if a man and woman get married, to replace them they need 2 people. ठीक है, if they have 1 child, उनकी replacement नहीं होगी. From 2 you come 1. So this is the idea कि or 2 people should produce 2 more people at least to replace them. और इसमें भी women are important because they are going to increase the fertility. और इसका issue ये होता है कि developed countries में तो नहीं, developing countries के अंदर हम अपनी 5th stage खराब कर रहे हैं. Why? Because हम selective abortions करते हैं of females. There is a female infanticide. एंड अभी भी है, लेकिन अब ये हो गया कि वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जैसे आपको पता लगता है कि वो उसकी बेबी की वो सेक्स क्या है, यू टर्मिनेट दी प्रेगनेंसी. तो ये देयर इज अ मिलियन मिसिंग वुमेन. इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, एक बुक भी है, हाफ द स्काई, जरूर पढ़िएगा, कि देयर आर वुमेन हु आर मिसिंग इन दिस वर्ल्ड, इन इंडिया एंड इन चाइना. कम हो गई हैं. देयर मोर मेन वुमेन रेशियो इज tilted towards men. So replacement fertility is generally slightly higher than 2, the level which replaces the 2 parents, both because boys are born more often than girls and to compensate for deaths prior to full reproduction. ठीक है, many European and East Asian countries now have higher death rates than birth rates. क्यों? क्योंकि उनकी aging population ज़्यादा हो गई है और वो aging population because of better health conditions वो they are continuing to live up to let's say 80. Japan में 80 तक, I think 79-80 उनकी वो life expectancy. So people are moving towards a very aging population. So population aging and population decline may eventually occur, assuming that the fertility rate does not change and sustained mass immigration does not occur, जो कि अभी यूरोप में थोड़ा सा और है लेकिन इतनी ज़्यादा अभी भी नहीं है. So this is the stage 5 here.
फिर इस पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ये एज्यूम किया गया है कि वो कंट्रीज जहाँ पर पूरे कंट्री से लोग जाते हैं, विच इज ट्रू, और वो अपने सोशल आइडिया साथ लेके जाते हैं, दे आर गोइंग टू हैव बिग फैमिलीज, which we have seen in the Syrian population, which has moved to Europe. They have 5 children, 4 plus, 4, 5, 6, 7, 8. You have documentaries in, or there are a lot of articles as well, published articles on the immigration into Europe and the rate of birth rate in those immigration populations. So let's look at the demographic transition in England and Wales. Okay. ये sources are world and data based on Wickley and Schofield. ये 1541 से अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, बर्थ 1000 ऑफ पॉपुलेशन है, ये बर्थ एंड डेथ रेट वहाँ से स्टार्ट होता है 40 and 30 से, फिर वो चलते चलते 1600s में यहाँ पे ब्लैक डेथ भी आई होगी, देन यू कीप मूविंग, ये 1700s में थोड़ा सा ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये क्रूड बर्थ रेट है और क्रूड डेथ रेट है। नाउ कीप सीइंग कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की ही फॉल आ रही है, ये स्टेशनरी हाई नजर आ रहा है आपको, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये स्टेज, ये दिस इज स्टेज 1, स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3 एंड करेंटली दे आर इन स्टेज 4 डिक्लाइन, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअल मेजरमेंट, और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पूरा देखिए कर्व मॉडल, बर्थ रेट ऊपर, डेथ रेट नीचे, ठीक, और ये 2015 तक की प्रोजेक्शंस हैं। So let's talk about the other theory, which is known as the Malthusian theory of population. This was an economist. His name was Thomas Robert Malthus. He wrote an ये essay आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, available freely on the internet. मैं upload भी कर दूँगी. Essay on the principle of population as it affects the future improvement of society. It came out in 1798 और इसमें शोर मचा दिया था जनाब। कहता है कि it explains the relationship between growth in food supply and population, और famine IVT in potato famine IVT in Ireland. So population increases in geometrical progression. वो कहता है कि population जो है वो geometrical है, food जो है वो arithmetical है, यानी कि एक बीज से एक ही आपको मिलेगी सब्जी, लेकिन अगर आप मैन वुमेन को इकट्ठा करेंगे तो उससे मतलब you're going to get more population. तो वो ये geometrical और arithmetical 1 2 3 4 5 6 for food, and population is 1 2 4 8 16 32 या जिसको हम exponential भी कहते हैं 200 years. तो वो कह रहा था कि population is going to outgrow the food, यानी कि फूड खत्म हो जाएगा दुनिया में। So उसका आइडिया ये था कि लोगों की पॉपुलेशन कम की जाए ताकि दुनिया में से रिसोर्सेज ना खत्म हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी। So imbalance leads to overpopulation. This is corrected by preventive checks जो हैं वो हैं late marriage, chastity and moral restraint. ये उस टाइम के आइडियाज थे। These were the ideas of Victorian England. फिर पॉजिटिव चेक्स हैं vice, misery, war, famine, floods, etc. जो कि नेचर की तरफ से आती हैं, ठीक है। So population tends to outrun food supply, but we saw जैसे industrial revolution आई, food production went up through the roof. There's so much excess of food production. उसके साथ medical supplies भी बेहतर हो गई, health infrastructure बेहतर हो गया, we had penicillin, and population did not die off, और वो food population वाला issue नहीं create हुआ। तो इसकी पॉपुलेशन, इसकी थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई थी, लेकिन ये चली नहीं। ये इसका था कि ये एक्सपोनेंशियल है जी, फूड सप्लाई ऐसे जा रही है, पॉपुलेशन ऐसे जा रही है, और एक टाइम आएगा सारे लोग एक दूसरे को फूड के पीछे मारना शुरू कर देंगे। दैट वाज हिज आइडिया। सो थ्योरी नंबर 3 है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। एडविन कन्नान इसका नाम था। हिज बुक वेल्थ वाज पब्लिश्ड इन 1924। इट इज कंसर्न्ड विद रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। Optimum population is the ideal population which, combined with other available resources or means of production of the country, will yield maximum returns or income per head. So natural resources of a country are given at a point in time, but they can change over time. No change in techniques of production. The stock of capital remains constant. His assumptions हैं, habits and tastes of people do not change. लेकिन assumptions real नहीं है, ठीक है। The ratio of working population to total population remains constant even with the growth of population. That does not happen. Working hours of labor do not change. That does not happen. Increased technology means for some people increase working hours, for other people decrease working hours. Modes of business organization are constant. Nothing in this life is constant. We are changing all the time. ठीक है। So he says at any given time, increase of labor up to a certain point is attended by increasing proportionate returns, and beyond that point, further increase of labor is attended by diminishing proportionate returns. He was an economist, and you can see that. ये मैक्सिमम है जी, ये यहाँ अंडर पॉपुलेशन है, M और N के दरमियान ये अंडर पॉपुलेशन है, और ये ओवर पॉपुलेशन है। X एक्सिस पे पॉपुलेशन, Y पे
PCI या GNI जो भी आप इसको बोलना चाहें, पर कैपिटा इनकम जिसको कहते हैं, और ये सेंटर में जो है ये ऑप्टिमम, लेकिन ऐसे होता नहीं, because there are a lot of factors that affect population, not just income. So let's quickly look at some data. World population 2020 and historical, ये 2020 में global population है, ठीक है, इसमें median age, density या fertility rate है, global urban population दी हुई है, और 1955 में देखिएगा 2.7 बिलियन से we became 7.7 बिलियन, और ये हम 10 years पे 5 years के ऊपर बिलियन इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो ग्रोथ है, दिस इज एक्सपोनेंशियल, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ increased travel, better medical facilities, and increased means of production, ठीक है, पैसा आने की वजह से ये सारा जो है ना, all of this is because of ease of living। अब लोगों के लिए हम नलको खोलते हैं तो पानी आ जाता है, जब हमें जाना पड़े ना जंगलों से गुजर के पानी लेना, बीच में शेर खा जाए, so these are the things that have changed for us, you know, हम यहाँ से ग्लास किचन तक नहीं रख सकते हैं। So current world population by region 2019, Asia, Africa, Europe, Latin America, Caribbean, North America, and Oceania are the 6 regions। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा एशिया के 4.6 बिलियन पीपल, देन अफ्रीका 1.3 बिलियन पीपल, ठीक है। ईयरली चेंज भी देखिएगा, अफ्रीका का ईयरली चेंज 2.49 है, हाई है, एशिया का 0.86 है, लो है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का देखेंगे तो वो हाई है, 2.2 के करीब है। तो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। माइग्रेशन भी देखिएगा, एशिया में से नेट आउट माइग्रेशन है, यूरोप में नेट इन माइग्रेशन है, फिर भी उनका रेट ईयरली चेंज 0.06% है। माइग्रेशन नहीं होगी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। देयर इज अ रीजन व्हाई दे वांट इमिग्रेशन अ लॉट। नाउ लेट्स लुक एट दीज 3 ये जो प्रोजेक्शंस है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस क्विकली, ये वर्ल्ड यूएन की हैं, मोर और लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। सो वर्ल्ड है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, मोर डेवलप्ड एंड लीस्ट डेवलप्ड। पूरी वर्ल्ड की जनरली ग्रो कर रही है। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो सबसे मोर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये रही, वो स्टेबल हो गई हैं। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो वॉर वगैरह की वजह से स्लो राइज है, लेकिन जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका सबसे हाई राइज है, ठीक है, दे आर बिकमिंग डेवलप्ड। तो यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस हैं बियॉन्ड 2020 देखिएगा, ठीक है, दोनों तरह की दी हुई हैं, हाई एंड लो दोनों दी हुई हैं, वर्ल्ड की भी, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सारी दी हुई हैं। एंड दिस इज पाकिस्तान की थी इन 2015, ये ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी डेटा है फ्रॉम द यूएन, एंड दिस इज इट, ठीक है। Thank you very much. Any questions? So this is mostly a theoretical presentation, conceptual theory. Any questions? Yes, Ruby. Ma'am, these models are based on just speculations or some sort of previous, previous studies of populations, previous history. अच्छा, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की ये स्टेज मैंने आपको दिखाई है ना, ये द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, DTM जिसको कहते हैं, ये तो रियलिटी बेस्ड है। ये देखो, ये इंग्लैंड और वेल्स का ही मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज रियलिटी बेस्ड। लेकिन जो दूसरे मॉडल्स हैं, जो कि ये मैल्थूसियन मॉडल है, ये इकोनॉमिकल मॉडल्स हैं, ये थ्योरेटिकल थे, ये ट्रू नहीं हुए, लेकिन ये मॉडल अभी तक ट्रू है। दिस मॉडल सो फार ऑल कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मॉडल for the change in their population, all countries. And Pakistan is in stage 3, remember, middle of stage 3. All right, ma'am. Okay, thank you. You're welcome. Any other questions? Sir, chat देख लीजिए। अच्छा, chat. Oh, okay. ये है यार, ये प्राइवेटली हो जाएगा, ठहरो। मिलियन मिसिंग गर्ल्स है मेरे ख्याल में उसका नाम, और सेकंड है, एक और भी है, हाफ द स्काई, पुलिट्जर हाफ द स्काई। मेरे पास ये सब PDF में मैं आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। प्राइवेटली क्यों जा रहे, एक सेकंड, टू एवरीवन, सो ठीक है, मिलियन मिसिंग गर्ल्स एंड हाफ द स्काई, फिनोमिनल बुक्स हैं, पढ़ने वाली बुक्स हैं। हमारे वर्ल्ड को जो मॉडल इस वक्त फिट करता है राइट नाउ इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, DTM करेंटली जो अप्लाई होता है, क्योंकि उसके साथ जो आप नीचे ये पॉपुलेशन पिरामिड्स हैं वो उसके साथ फुली इंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको अपलोड कर दूंगी। एंड यू नो गाइस, आई नो कि हम लोग मेडिसिन में हैं, एंड यू नो वी आर
we are a clinic, we are clinicians, but to enrich our understanding of our clinical practice, I think हम लोगों को थोड़ा सा sociology में, demography में थोड़ा सा venture करना पड़ेगा, even if you want to become clinicians, ठीक है? So this is something that जो मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें देती रहती हूँ, उनको थोड़ा सा explore जरूर किया करें, because these things affect you ultimately as a clinician. Don't think you'll be sitting in that one room behind that one desk and chair and looking at one patient one by one. तो ये सारी जो outside forces हैं वो affect नहीं करती, वो fully affect करती. इसीलिए जब भी आपके पास females आएंगी तो आपने उनकी education करते रहना है कि have less number of children, ठीक है, and educate them more, ताकि वो आगे healthy हो. Health and education are hand in glove. Any other questions? अच्छा, इसके साथ जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी ना, उसके अंदर ऑस्पी आएगी बैलेंसिंग इक्वेशन की, ठीक है, वो मैंने लास्ट टाइम नहीं दी थी. आई गिव यू एन इजी, क्योंकि वो आपका वीकेंड तक और 14 अगस्त, लेकिन अब वो आएगी. ठीक हो क्या? Thank you very much, guys. And okay, so I have one thing to say that guys, when I put up the presentations, मैं उनमें थोड़ी सी slides और add कर देती हूँ. वो सिर्फ ग्राफ्स होते हैं, ठीक है. इसका ये मतलब नहीं कि आपने परेशान होने के लिए इतनी बड़ी वो प्रेजेंटेशन बन गई है. इट इज नॉट दैट बिग अ प्रेजेंटेशन. इसमें सिर्फ ग्राफ्स हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, बट डू लुक एट इट. वो इंटरेस्टिंग ग्राफ्स हैं, दीज आर इंटरेस्टिंग थिंग्स. आई विश हमारे लेक्चर्स थोड़े और लंबे होते कि मैं आपको वेबसाइट्स दिखा सकती जहाँ पे ये मॉडल जो है वो रियल टाइम उन्होंने दिखाए हुए, बट यू नो 45 minutes is not enough. Thank you very much, everybody. Thank you very much. Have a great rest of the day. Have a great rest of the day. Allah Hafiz. Allah Hafiz.